પૌરાણિક સંશોધનની લેબ બની ગયું છે। હાલમાં જ વૈજ્ઞાનિકોએ એક મોટી શોધ કરી છે। બસ કરતાં પણ મોટા સાપના અશ્મિઓ મળી આવ્યા। આ અશ્મિઓ પરથી સાપની અંદાજિત લંબાઈ 10 થી 15 મીટર હોવાનું અનુમાન લગાવાયું છે અને આ અવશેષો અંદાજે 4.7 કરોડ વર્ષ પુરાણા એટલે કે પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળમાં હોવાનો દાવો કરાયો છે। આ વાસુકી ઇન્ડેક્સ સાપના અવશેષો સૌપ્રથમ આઈઆઈટી રૂરકીના પ્રોફેસર સુનિલ વાજપેયીને વર્ષ 2005માં મળી આવ્યા હતા। કચ્છના પ્રાંદ્રોમાં આવેલી કોલસાની ખાણમાં તેમને આ અવશેષો મળ્યા હતા। તે સમયે એવું લાગ્યું હતું કે આ પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળના જ એક પ્રચલિત મગરના અવશેષો છે, પરંતુ જ્યારે દેવજીત દત્તાએ તેમની પ્રયોગશાળામાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે તેમણે આ અશ્મિઓ પર સંશોધન કર્યું। દેવજીત દત્તા પ્રમાણે તે સમયનું ઊંચું તાપમાન તેની મોટી શરીર रचना માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે। ये जो हमको वासुकी इंडिकस करके यू कैन से मैस्टिडोलॉन करके इसका नाम है स्पीशीज जीनस लेवल पर, तो उसके हमें फॉसिल रिमेन्स मिले हैं और इसको प्रोफेसर सुनील वाजपेयी हैं आईआईटी रुड़की के, उन्होंने उसको डिस्कवर किया और उनकी टीम, उनके पोस्ट डॉक स्टूडेंट हैं, उन्होंने उसको डिस्कवर किया और उसके ऊपर काम किया है। ये जो फॉसिल है ये एक आज के प्रेजेंट डे पाइथन या फिर एनाकोंडास उनसे भी बड़ा है और हमको बेसिकली लिग्नाइट माइंस मतलब आपका मार्शी एनवायरनमेंट या फिर जहाँ पर बहुत सारा वेजिटेशन होता है वहां से मिला है। तो ऐसा कह सकते हैं कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन अच्छा था, इनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना भी मिल रहा था और साथ में इनके लिए प्रेडेटर्स नहीं थे जो कि इनको मार सके, तो इसलिए अच्छे से बड़े, बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई और ये बड़े हुए हैं और वहां पे अराउंड 10 to 15 फीट लंबे स्नेक्स मिले हैं वहां पर। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट ने और हम सब ने जियो हेरिटेज साइट्स बहुत सारे डिक्लेयर करे हैं कि हम लोगों को यहाँ पे जियो हेरिटेज बनाना चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो वैसे ही पानिंद्रो साइट जो है उसको भी जियो हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के लिए हमने यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और बाकी सारे डिपार्टमेंट से भी हमने उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं बोल सकते, हमने रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो जैसे धौलावीरा में फॉसिल पार्क रिस्टोर करा है वैसे ही ये चीज भी यहाँ पे भी रिस्टोर करने का अभी तक सैंक्शन नहीं आया है लेकिन प्रोसेस में है, तो हो सकता है अगर इन फ्यूचर आ जाए तो फिर देन हम उसको भी प्रिजर्व करें। એટલે કે જોવામાં આવે તો અત્યાર સુધીના પ્રકાશિત થયેલા સંશોધનો અનુસાર આ સૌથી મોટું કદ ધરાવતો સાપ સાબિત થયો છે અને હજુ વધુ સંશોધન ચાલી રહ્યું છે। ત્યારે આ સંશોધનથી ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયાના અભ્યાસ માટે માહિતીનો જેકપોટ સાબિત થશે।